Once again, a great greetings to all you student. We are here with the second video of photosynthesis in which we are going to discuss about little bit molecules. So, when molecules absorb or emit light, they change their electronic state. This is very important topic because we already know about the chlorophyll molecules which absorb sunlight, but what is the effect of this sunlight in the molecules, we will discuss in this chapter. When molecules absorb or emit light, they change their electronic state. Chlorophyll appears green to our eyes because it absorbs light mainly in the red and blue parts of the spectrum. So, only some of the light enriched in green wavelength, about 550 nm, is reflected into our eyes. The absorption of light is represented in the equation. We can see here chlorophyll plus H nu become excited chlorophyll. The absorption of light in which chlorophyll in its lowest energy or ground state absorbs a photon and makes a transition to a higher energy or excited state, that is chlorostar. It is chlorostar. So here we can see the distribution of electrons in the excited molecule is somewhat different from the distribution in the ground state molecule. So we will discuss further in next points. Absorption of blue light excites chlorophyll to a higher energy state than absorption of red light because the energy of photon is higher than their wavelength in shorter. So हम यहाँ पे जानते हैं कि हायर वेवलेंथ किसका है? हायर वेवलेंथ है रेड लाइट का, तो उसकी एनर्जी हो जाती है कम बिकॉज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो हायर वेवलेंथ जिसका होगा यानी कि रेड लाइट का वेवलेंथ हायर है, तो रेड लाइट की वजह से उसकी एनर्जी जो है वो कम होगी. द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेड लाइट बिकॉज द एनर्जी ऑफ फोटोन इज हायर व्हेन देयर वेवलेंथ इज शॉर्टर, तो उसका ब्लू लाइट का ज़्यादा होगा. In the higher excited state, chlorophyll is extremely unstable, very rapidly gives up some of its energy to the surrounding as heat and enters the lowest excited state, where it can be stable for a maximum of several nanosecond, 10 to power minus 9 second. Because of this inherent instability of the excited state, any process that captures its energy must be extremely rapid. In the lowest excited state, the excited chlorophyll has 4 alternative pathways for disposing of its available energy. यानी कि जब सनलाइट जब पहुंचता है क्लोरोफिल के पास तो वो क्या करते हैं, 4 तरह की बातें होती हैं. अगर वो हायर वेवलेंथ, अगर उनको हायर एनर्जी मिला जो लोएस्ट वेवलेंथ वाला है जैसे ब्लू, तो वो बहुत जल्दी अपना मतलब 10 टू पावर माइनस 9 सेकेंड में वो अपना तुरंत हीट एज अ हीट एनर्जी कुछ एनर्जी को निकाल देते हैं और एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं, बस थोड़ा लो एक्साइटेड स्टेट में आते हैं. और अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में आ गए तो वो आगे चल के 4 पाथवे को अपनाते हैं. पहला, excited chlorophyll can re-emit a photon and thereby return to its ground state, a process known as fluorescence. तो जो एक्साइटेड क्लोरोफिल है वो तुरंत अपना फोटोन जो है वो वापस निकालता है, रीमिट करता है और फ्लोरोसेंस स्टेट में आता है जिसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट. When it does so, the wavelength of fluorescence is slightly longer than the wavelength of absorption because a portion of the excitation energy is converted into heat before the fluorescent photon is emitted. Chlorophyll fluoresce
in the red region of the spectrum. Second है, the excited chlorophyll can return to its ground state by directly converting its excitation energy into heat with no emission of photon. जब emission of photon होगा तो वहाँ पे fluorescence होगा, और जब emission of photon नहीं होगा, जब हीट एनर्जी निकलेगी तो वहाँ पे फ्लोरोसेंस नहीं होगा. नेक्स्ट, the third one is chlorophyll may participate in energy transfer, during which an excited chlorophyll transfer its energy to another molecule. And a fourth process is photochemistry, in which the energy of the excited state causes chemical reactions to occur. The photochemical reactions of photosynthesis are among the fastest known chemical reactions. This extreme speed is necessary for photochemistry to compete with the three other possible reactions of the excited state just described. तो क्या होगा कि या तो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, या एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी, या हीट एनर्जी में निकल जाएगी, या फिर फ्लोरेसेंट हो जाएगी. सो इसीलिए जल्दी से फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन किया जाता है ताकि जो भी एनर्जी आई है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए. तो यहाँ पे हमने 4 स्टेप्स देखा. चलिए यहाँ देखते हैं कि क्या चेंजेस आता है. ये जो सेक्शन है ये बताएगा कि हम देख सकते हैं यहाँ इन दिस फिगर, light absorption and emission of chlorophyll. So, light absorption and emission by chlorophyll, A and B, 2 parts में हम इसको यहाँ देखेंगे. A and B part. The A part will show energy level diagram, absorption और emission of light. हम देख सकते हैं. Energy level diagram, absorption or emission of light is indicated by vertical lines that connect the ground state with excited electron state. The blue and red absorption band of chlorophyll, which absorb blue and red photon respectively, corresponds to the upward vertical rows, signifying that energy absorbed from light causes the molecule to change from the ground state to an excited state. The downward pointing arrow indicates fluorescence, in which the molecule goes from the lowest excited state to the ground state while re-emitting energy as a photon. This region is higher excited region. And this region is lowest excited region. So when chlorophyll absorbs blue light, the molecule reaches to the higher excited state, and just at that time it gives its energy as heat loss and become लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट, नॉट द ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट पे नहीं आते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ दिस स्टेट में आते हैं. ये स्टेट क्या है? लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट है. तो पहले कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर उसने ब्लू लाइट एब्जॉर्ब किया क्लोरोफिल ने, तो वो पहले हायर एक्साइटेड स्टेट आएगा और तुरंत वो हीट लॉस करके लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट में आएगा. अगर किसी मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्प्शन ऑफ रेड लाइट किया तो वो पहले ही लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट में आएगा और तुरंत वो अपनी एनर्जी एज अ फ्लोरोसेंस, लॉस ऑफ एनर्जी बाय इमिशन ऑफ लाइट. फ्लोरोसेंस इज व्हाट? फ्लोरोसेंस इज not only the loss of heat, but it is the loss of energy in the form of light of longer wavelength.
ठीक है, तो लॉन्गर वेवलेंथ के लाइट में ये तुरंत नीचे आएगा और वहाँ पे चमक आएगी, फ्लोरेसेंस होगा, एक लाइट दिखेगा और तुरंत वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, लोएस्ट एनर्जी स्टेट में। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लू रीजन जो है जिसका वेवलेंथ कम है पर एनर्जी उसकी ज़्यादा है, तो हायर स्टेट में पहुँचा देता है मॉलिक्यूल को। यहाँ हम देख सकते हैं 400 नैनोमीटर, बट रेड लाइट जो है वो 700 नैनोमीटर के अप्रॉक्स है और इसमें जो है इसका एब्जॉर्प्शन और यहाँ पे फ्लोरोसेंस होता है, लाइट यहाँ पे फ्लोरोसेंट करता है। तो इस और हम बी में देखेंगे, जो हमारा बी सेक्शन है, यहाँ पे बी सेक्शन हमें बताएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर हो रहा है कि जो स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रा ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड फ्लोरोसेंस, ये पहले क्या था, पहले था लाइट एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन बाय क्लोरोफिल, एंड द नेक्स्ट वन बी सेक्शन में हम देख रहे हैं स्पेक्ट्रा ऑफ, यहाँ हम देख सकते हैं स्पेक्ट्रा ऑफ एब्जॉर्प्शन। सो यहाँ पे स्पेक्ट्रा ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड फ्लोरोसेंस, द long wavelength red absorption band of chlorophyll corresponds to light that has the energy required to cause the transition from the ground state to first excited state. The short wavelength blue absorption band corresponds to the transition to a higher excited state. Yeah, we will see here. This is super excited state and super excited state, this blue one, and that is called first excited state, and this is second, this is first, sorry, red area is first excited state and this is super higher excited state. So when chlorophyll molecule reaches to blue, when absorbs blue light, it just gives its energy in the form of heat and come to lowest excited state, and when it directly absorbs red light, it fluorescence, it shows little bit fluorescence and come to the lowest energy state. And in between these state, plant have to go either to these two options, either it क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को या तो उसकी एनर्जी को दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करना होगा या फिर उसी दौरान जल्दी से फोटोकेमिस्ट्री को परफॉर्म करना होगा, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन को जल्दी से परफॉर्म करना होगा. सो हियर वी कैन सी द मॉलिक्यूल्स. फर्स्ट chlorophyll molecule, chlorophyll A, methyl group is added here. We can see the structure of these molecules. The methyl group is here, and in chlorophyll B molecule, aldehyde group is added in the place of methyl group. So, and in bacterial chlorophyll we can see these types of structures are found. So, the carotenoid structure is this. We can see the structure of carotene and Billene group, Billene pigment. So, in this unit, we have discussed about the excited states of different chlorophyll molecule and what plant did after getting energy. In this section, we have already discussed solar spectrum and solar spectrum curve. We can see here the solar spectrum and its relation to the absorption spectrum of chlorophyll. Curve A is the energy output of the sun as a function of wavelength. Curve B is the energy that strikes the surface of earth, and the sharp valleys in the infrared region beyond 700 nanometer represent the absorption of solar energy by molecules in the atmosphere, chiefly water vapor. Water vapor absorbs infrared region light beyond 700 nanometer, and curve C is the absorption spectrum of chlorophyll, which absorbs strongly in the
blue and red light, that is 430 nanometer between 660 nanometer portion of the spectrum. Because the green light in the middle of this visual region is not efficiently absorbed and most of it is reflected into our eyes and gives plants their characteristic green color. So we can see here, this is solar output. The first black graph. The second red graph is the energy at Earth's surface. And the third green graph shows absorption by chlorophyll between 400 to 800, that is 700 nanometer. And the sunlight provided by the plant is from 1 to 2000 and more than that also. And energy on the earth is this, that is absorbed infrared light absorbed by water vapor also we have learned. So in this chapter, in this series of video, we have discussed different types of physics about sunlight and different types of chemistry going inside the chlorophyll molecule. So till then, thank you. We'll discuss further into next video.